Hello student, I am Nidhi Shrivastava, Assistant Professor in NIT Pharmacy Institute. Today I will deliver the lecture on alkalimetry titration. What is alkalimetry titration? The alkalimetry titration basically involves the non-aqueous titration. Non-aqueous titration is used for the titration of weak acid and weak base. So, I have already discussed about the non-aqueous titration and the types of the non-aqueous titration. Non-aqueous titration is basically used for the titration of weak acid and weak base, because weak acid and weak base not dissociated in the water. So the titration involve non-aqueous titration, and the types of the non-aqueous titration has two. First is the alkalimetry and the second is the acidimetry. I have already discussed about the acidimetry titration. Acidimetry titration is used for the titration of weak base and standard use in their acid, strong acid. In alkalimetry titration, the titration involve the weak acid and the standard use base, strong base. So, alkalimetry titration is the same concept of specialized analyte acid base titration, but for an acidic substance using standard base. So, alkalimetry titration is only used for the titration of the weak acid in there, the base used as a standard. Okay. So, non-aqueous titration involve two types of titration. First is the acidimetry titration and the second is the alkalimetry titration. Acidimetry titration I have already discussed, but alkalimetry titration not discussed. So, today I will discuss alkalimetry titration. Okay. So, the example of the alkalimetry titration, the titration of acetic acid with NaOH. During this titration, as the OH react with the H plus ion from acetic acid, the acetate ion is formed. क्या होता है alkalimetry titration में? टाइट्रेशन करेंगे हम वीक एसिड का, जो यहाँ पर हम ले रहे हैं एज अ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के साथ इन्वॉल्व होगा NaOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. OH of the NaOH is react with the H plus ion from the acetic acid and form the water, and this concept is used only for the alkalimetry titration for weak acid only. Okay. And the formation of the acetate ion, this conjugate base react with water and to form a slightly basic solution. Acidic substances are usually determined quantitatively by methods similar to those used for the quantitative determination of bases. In alkalimetry titration, the normality of the acidic substance is equivalent to the normality of the basic substance. क्या होता है alkalimetry titration में, जो भी हम acid substance ले रहे हैं उसको टाइट्रेट करने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो हम बेस यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन होगा. मींस एसिड को टाइट्रेट करने के लिए, एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कितना ml बेस रिक्वायर्ड हुआ, तो उसकी क्वांटिटी हम डिटरमाइन करेंगे बाय द एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन. टाइट्रेशन एसिड का होगा, वीक एसिड का, लेकिन एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन के थ्रू हम कितना बेस यूटिलाइज होगा एसिड को टाइट्रेट करने के लिए, वीक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे. However, two methods are generally adopted for the assay of acidic substances. These are direct titration methods and residual titration method. Direct titration method is related to the simple titration, जो हम acid base titration में use करते हैं.
डायरेक्ट टाइट्रेशन ही हम ज़्यादातर एसिड बेस टाइट्रेशन या नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एंड पॉइंट बहुत जल्दी डिटरमाइन हो जाता है। इसमें हमें कोई भी चाहे वो टाइट्रेंट हो, चाहे वो एनालाइट हो, किसी को भी एक्सेस अमाउंट में नहीं रिक्वायर्ड, मतलब नहीं प्रिपेयर करना होता है। तो इट इज़ accomplished by directly titrating an exact quantity of the acid salt or other acidic substances with standard alkali solution। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में जितना हम एसिड सॉल्ट्स या अदर एसिडिक सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो भी क्वांटिटी है, जो भी नॉर्मेलिटी है, वो सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग किसके रहेगी, जो एल्कली सॉल्यूशन साथ में यूज़ हो रहा है। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड सिंपल टाइट्रेशन मेथड है, बट रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड इट इज़ कैरीड आउट बाय द addition of an excess of the standard alkali solution and subsequently determining the amount of excess residual titration with standard acid solution। जो रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड है, इसमें जो एल्कली है, जो स्टैंडर्ड बेस यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सेस अमाउंट में एसिड सॉल्यूशंस भी होना चाहिए। ये रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड बैक टाइट्रेशन एंड इट इज़ यूज फॉर ओनली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो टाइट्रेशन, जिस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करने में बहुत टाइम लगता है, एंड पॉइंट बहुत टाइम में आता है, वहाँ हम बैक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब जो भी एक्सेस में हम टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं वो पूरा कंज्यूम होता है, इसलिए हमें एक्सेस में दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। तो एंड पॉइंट बहुत टाइम में डिटेक्ट होने की वजह से यहाँ एक्सेस में हमें दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो टाइट्रेंट हो और एनालाइट हो। इसलिए रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। As a general principle, the following guidelines may be observed carefully. In alkalimetry titration, some guidelines carefully observed. First is the normality of the solution obtained by dissolving the acidic substances must be approximately the same as that of the titrant. जो भी हम नॉर्मेलिटी बना रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन की, हमें अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द बेसिक जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करनी होगी। द लिक्विड एसिडिक सब्सटेंस टू बी टाइट्रेटेड मस्ट बी ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बिफोर टाइट्रेशन बिकॉज मैनी इंडिकेटर्स ऑफर डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो जो भी लिक्विड एसिडिक सब्सटेंस हम टाइट्रेट कर रहे हैं, वहाँ रूम टेम्परेचर टाइट्रेशन से पहले ही हमें 25 डिग्री सेल्सियस सेट करना होगा, क्योंकि जो एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं नॉन एक्वस इंडिकेटर, वो डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हमें रूम टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस सेट करना होता है। थर्ड पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ द एसिड टू बी टेकन शुड बी कैलकुलेटेड इन अ सच मैनर that approximately 30 to 40 ml of the previously standardized base shall be utilized for the assay. Solvents used in the alkalimetry titration, most commonly used solvent are ethylene diamine, acetone, chloroform and morphine. These are the solvent which is used in alkalimetry titration. These solvents either increase the strength of the acid or do not interfere in the reactions. Titrant, in the titration of weak acidic compound, methoxide of alkali metals like potassium, sodium, lithium are used as a titrant. So, in alkalimetry titration, for the titration of the weak acidic compound, we can use alkali metal which is of methoxide and alkali metal like potassium, sodium, lithium used as a titrant. Potassium methoxide and sodium methoxide are stronger titrant, but it is not used because it produces the gelatinous product. So, lithium methoxide in toluene and methanol prefer as the titrant.
क्या होता है, जो पोटेशियम मेथॉक्साइड और सोडियम मेथॉक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर टाइट्रेंट है, लेकिन जब एंड पॉइंट होता है तो एंड पॉइंट पर ये जिलेटिनस प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। इसकी वजह से हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लिथियम मेथॉक्साइड को यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर किस में करेंगे, टोलुइन एंड मिथेनॉल। इंडिकेटर, commonly used indicators are, first is the thymol blue and the second is 0.2% weight by volume azo-violet solution in benzene. These are the indicator which is used in alkalimetry titration. Alkalimetry in non-aqueous titration. अब हम कुछ ऐसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन को परफॉर्म किया गया है बाय द एल्कलीमेट्री प्रोसेस एंड यूज फॉर द वीक एसिड. सो अ प्लेथरा ऑफ weakly acidic pharmaceutical substances may be titrated effectively by making use of a suitable non-aqueous solvent with a sharp end point. तो ज़्यादातर जो हमें वीकली एसिडिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज हैं उनको हम टाइट्रेटेड करते हैं एक सुटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के साथ बिकॉज ऑफ द शार्प एंड पॉइंट. द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड एनहाइड्राइड्स, एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एसिड हैलाइड्स, इनॉल्स, बार्बिचुरेट्स, xanthines, sulfonamides, phenols, imide, and lastly the organic source of the inorganic acids. So these are the compounds which organic compounds which include in the alkalimetry titration. However, a weak inorganic acid, for example boric acid, can be estimated conventionally employing ethylene diamine as the non-aqueous solvent. Preparation of 0.1 normal पोटेशियम मेथॉक्साइड इन टोलुइन मिथेनॉल. सो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन देखनी है मिथॉक्साइड सॉल्यूशन की, क्योंकि मिथॉक्साइड सॉल्यूशन ही हमें फर्दर आगे जो भी टाइट्रेशन है उसके प्रोसेस में यूज़ करना है. तो हमें ये देखना है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम मिथॉक्साइड किस में प्रिपेयर करेंगे, टोलुइन और मिथेनॉल के मिक्सचर में. तो material required, there are absolute methanol 40 ml, dry toluene which is 50 ml, potassium metal 4 gram. So these are the materials and chemicals which are required for the preparation of 0.1 normal potassium methoxide. Procedure: firstly add into a dry flask. सबसे पहले ड्राई कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें ऐड करेंगे अ मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल 40 ml एंड ड्राई टोलुइन 50 ml. सो मिक्सचर लेंगे 40 ml मिथेनॉल का और टोलुइन 50 ml का एंड कवर इट लूजली, इसको लूजली कवर कर देंगे. नाउ केयरफुली ऐड freshly cut pieces of potassium metal to the above mixture gradually with constant shaking. So potassium metal यूज़ किया है यहाँ पर और उसके pieces को कट कर लेंगे, freshly pieces होंगे जिसको कट करके इसमें ऐड कर देंगे with constant shaking के साथ. After complete dissolution of potassium metal, जब पोटेशियम मेटल जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, एड इनफ एब्सोल्यूट मिथेनॉल टू यील्ड अ क्लियर सॉल्यूशन. तो थोड़ा सा इसमें और मिथेनॉल ऐड कर देंगे जिससे कि सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो जाए. टोलुइन 50 ml इज एडेड विद कांस्टेंट शेकिंग until the mixture turns hazy in appearance. The process is repeated by the alternate addition of methanol and benzene until 1 liter of solution is obtained, taking care to add a minimum value of methanol to give a visible clear solutions. So that was the preparation of potassium methoxide. ऐसे ही हम सोडियम मिथॉक्साइड और लिथियम मिथॉक्साइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सेम ही प्रिपरेशन होगी, बस क्वांटिटी में डिफरेंस होगा. तो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मिथॉक्साइड अगर प्रिपेयर करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड exactly in a similar manner as for the 0.1 normal potassium methoxide.
बट यूजिंग 2.3 ग्राम फ्रेशली कट सोडियम। बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, सोडियम यूज हुआ है पोटेशियम की जगह पे और 2.3 ग्राम हुआ है इन द प्लेस ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 normal lithium methoxide, it is prepared as for 0.1 normal potassium methoxide but using 0.7 gram of lithium place of potassium। तो बस जो आपने मेटल यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस है, उसके अलावा सारा प्रोसीजर एज इट इज रहेगा जैसे कि पोटेशियम मेथॉक्साइड को प्रिपेयर करने में यूज हुआ था। Now the standardization of 0.1 normal methoxide solution, there are material requires DMF dimethyl formamide 10 ml required होगा, थाइमोल ब्लू यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर विच इज यूज्ड 0.3% इन MeOH एंड 0.1 नॉर्मल मिथॉक्साइड इन टोलुइन मिथेनॉल, ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे जैसे अभी हमने इसकी प्रिपरेशन देखी थी, एंड बेंजोइक एसिड लेंगे 0.6 ग्राम। तो दीज आर द मटेरियल्स विच इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल मिथॉक्साइड सॉल्यूशन। प्रोसीजर, it is employed for the standardization of 0.1 normal methoxide solution. Transfer 10 ml of DMF dimethyl formamide in a conical flask and add it 3 to 4 drops of thymol blue indicator। तो फर्स्टली स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले 10 ml DMF लिया कॉनिकल फ्लास्क में, देन उसमें ऐड किया 3 to 4 ड्रॉप ऑफ थाइमोल ब्लू एंड फर्स्टली न्यूट्रलाइज द एसिडिक इम्प्योरिटी। सबसे पहले जो भी एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं DMF में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे बाय टाइट्रेटिंग, किसके थ्रू, बाय टाइट्रेटिंग विद 0.1 नॉर्मल लिथियम मिथॉक्साइड जो हम पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं इन टोलुइन मिथेनॉल मिक्सचर में। नाउ quickly introduce 0.06 gram of benzoic acid and titrate immediately with methoxide in toluene methanol. This is the apparatus which is used for the titration, alkalimetry titration apparatus for standardization of methoxide. So this is conical flask, this is burette and this is magnetic stirrer. Magnetic stirrer is for the movement which is involved for the movement of the solution. Equation, नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन की हमें इक्वेशंस देखनी होंगी। द वेरियस इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शंस आर समराइज्ड एट एज स्टेटेड बिलो। फर्स्टली क्या होगा, जो हमने सोडियम मेटल लिया है, सोडियम मिथॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोडियम मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, सोडियम रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, interaction between sodium metal and methanol is an exothermic reaction and hence special care must be taken because it is exothermic reaction, heat भी produce हो रही है, light भी produce हो रही है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा special care देनी होगी और जो भी आपका product है वो reactant से कम energy रखेगा। So special care must be taken while adding the metal into the dry solvent in small lots of intervals with adequate cooling so as to keep the reaction well under control। तो इस रिएक्शन को बहुत ही, क्योंकि मेटल यूज़ कर रहे हैं, सोडियम मेटल वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली रिएक्शन को करना है। नाउ वाटर रिएक्ट विद द sodium methoxide and form methyl alcohol and sodium hydroxide. Now bicarbonate also react, these are the other reaction of for the sodium methoxide. Bicarbonate react with the sodium methoxide and form methyl alcohol and sodium carbonate. The clear solution of sodium methoxide must be kept away from moisture and atmosphere
carbon dioxide as far as possible, so as to avoid the above two chemical reactions that might ultimately results into the formation of turbidity. Now जो finally reaction है, this is benzoic acid and it react with DMF solvent and form the protonated solvent protonated compound, and so benzoate also formed. Now sodium methoxide dissociated with methoxide and sodium. Now protonated compound react with methoxide and form the solvated compound and methyl alcohol. Now add all the reaction and form the benzoic acid and sodium methoxide, form sodium benzoate and methyl alcohol. So this is the final reaction which is occurs in the process of titration. अब हम एक बार सारे steps देख लेते हैं. In step 1 it shows the solution of benzoic acid, primary standard, used as a primary standard in DMF. Step 2 it depicts ionization of sodium methoxide, and step 3 it illustrates the interaction between the solvated proton and the methylated ion, and in summing up, the net reaction in the process of standardization has been expressed. Now firstly we have know about the standardization of ethosuximide. This is the general example of alkylimetry titration. In their materials required: ethosuximide 0.2 gram, DMF 50 ml, azoviolet used as an indicator 0.1% weight by volume, which is prepared in DMF, and 2 drops सोडियम मिथॉक्साइड 0.1 नॉर्मल. तो सोडियम मिथॉक्साइड तो हम वैसे ही बना लेंगे. ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है कि हम ये देख रहे हैं कि सोडियम मिथॉक्साइड का हम कहाँ कहाँ किस किस टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं. तो इथोसक्सीमाइड इज ऑल्सो यूज इन द alkylimetry titration. So procedure: weigh accurately about 0.2 gram ethosuximide, dissolve in 50 ml of DMF, add 2 drops of azoviolet solution and titrate with 0.1 normal sodium methoxide to a deep blue end point. Okay, end point blue होगा, deep blue, taking precaution to prevent absorption of atmospheric carbon dioxide. वही अगर सोडियम मेथॉक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होने की वजह से हमें सारे प्रिकॉशंस लेके चलने होंगे. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.2 ग्राम इथोसक्सीमाइड लिया है, उसमें उसको ऐड किया है 50 ml DMF एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ एजोवायलेट, और उसको टाइट्रेट किया है 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड से. एंड पॉइंट जो है वो डीप ब्लू कलर का आ रहा है. सो नाउ we will see the example of ethosuximide, which is also used as a weak acid and titrate by the sodium methoxide. So materials required in there: ethosuximide 0.2 gram, DMF 50 ml, azoviolet as a indicator 0.1% weight by volume and prepared in DMF, which is used 2 drops and sodium methoxide 0.1 normal. तो सोडियम मिथॉक्साइड को तो हम पहले जैसे हमने प्रिपरेशन देखी उसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे. नाउ हम प्रोसीजर देखते हैं टाइट्रेशन का मिथॉक्साइड का. तो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर इथोसक्सीमाइड solution, weigh accurately about 0.2 gram ethosuximide, dissolve in 50 ml of DMF and 2 drops of azoviolet as the indicators and titrated with 0.1 normal sodium methoxide to deep blue end point occurs. So ethosuximide का एग्जाम्पल हमने लिया. इथोसक्सीमाइड को सोडियम मिथॉक्साइड जो कि 0.1 नॉर्मल हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो उससे हमने टाइट्रेट किया. तो टाइट्रेट करने से पहले हमने उसको प्रिपेयर किया 0.2 ग्राम लेके 50 ml उसमें हमने DMF लिया और 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर
यूज़ किया। और टेकिंग द प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें प्रिकॉशन इसलिए लेना है क्योंकि हम सोडियम मेटल यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में एंड पॉइंट ब्लू कलर का डिटरमाइन होगा। रिएक्शन ये होगी, ईथोसक्सीमाइड सोडियम इथोक्साइड फॉर्म द salt of the sodium ethosuximide, sodium salt of ethosuximide, and this is the calculation. Now tetrabutyl ammonium hydroxide, standardization of tetrabutyl ammonium hydroxide, material required tetrabutyl ammonium iodide 40 ml 40 gram, absolute methanol 90 ml, silver oxide 25 gram, dry toluene 150 ml, and start the procedure. Carefully dissolve 40 gram tetrabutyl ammonium iodide or 90 ml absolute methanol, add 20 gram finally powder purified silver oxide, and finally shake the mixture throughout the for 1 hour. Centrifuge about 2 to 3 ml of the resultant mixture and test for the iodide in supernatant liquid. This is the reaction, tetrabutyl bromide, iodide, this is the iodide, and silver oxide and water form the tetrabutyl ammonium hydroxide. Standardization, material required benzoic acid 60 gram, DMF 10 ml, thymol blue solution 0.3% which is prepared in methanol, and 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide. Procedure, accurately weigh 60 mg benzoic acid into 10 ml of neutralized DMF and add 3 drop of thymol blue indicator and titrate with 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide. Allow the benzoic acid to dissolve gradually and complete, and titrate with 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide, preferably in an atmosphere of CO2 free nitro ion. Now, last example of chlorthalidone. Material required chlorthalidone 0.3 gram, pyridine which is dehydrated 50 ml, 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide. Procedure, weigh accurately about 0.3 gram and dissolve in 50 ml of dehydrated pyridine. Titrated with 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide, determining the end point which is potentiometrically and protecting the solution, and titrate from atmospheric carbon dioxide throughout the determination, perform a blank determination and make any necessary correction. So, this is the titration of chlorthalidone by the 0.1 normal tetrabutyl ammonium hydroxide. This is the reaction which is used for the tetrabutyl ammonium hydroxide and chlorthalidone. Now, we can see the tetrabutyl ammonium hydroxide procedure. In case it gives a positive test, add about 2 gram more of silver oxide and shake for an additional period of 30 minutes. The said method may be repeated until the supernatant liquid obtained is completely free from iodide. तो अगर हम इस मेथड को कर रहे हैं तो 2 ग्राम हमें सिल्वर ऑक्साइड मोर लेना होगा, जिससे उसको शेक करके 30 मिनट के लिए शेकिंग करनी होगी, देन उसको यूज़ करना होगा और रिपीट करना होगा पूरे प्रोसीजर को, जिससे कि वो पूरी तरह से फ्री हो जाए आयोडाइड से. और then the mixture obtained is filtered through a fine sintered glass filter, and finally rinse the container with 3 portions each of 50 ml of dry toluene. These washing may be added to the filtrate and the final volume is made up to 1 liter of toluene. So, this is the
preparation of the tetrabutyl ammonium hydroxide, and we can also we will also discuss all the alkalimetry titration. Alkalimetry enables use to determine the acidity of water. alkalimetry के through acidity of water को भी determine कर सकते हैं, which is used for the different type of drug. And disadvantage of the alkalimetry and limitation also, it is used only for non-aqueous solvent and only for the weak acid titration. Thank you.